अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब लोग? वी होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, जैसा कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी पे पाबंदी थी, लेकिन अब नई गवर्नमेंट बन गई है, नई हुकूमत ने ऐसी तमाम पाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं। और तो अब जमात इस्लामी से जो चाइनीज़ इन्वाई है वो मिला है और अब इस तरह की और मुलाकातें होंगी और इसमें मुल्क जो है वो मज़ीद एक दूसरे से उनके जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ेंगे दूसरे मुल्कों के साथ। तो देखते हैं इस वीडियो में कि चाइनीज़ इन्वाई ने जमात इस्लामी से क्या बातचीत की है। Big changes are happening in Dhaka. Enemies are becoming friends, rivals are becoming partners, and old friends are becoming foes. It's a major churn after Sheikh Hasina's ouster. And who is benefiting from it? Looks like everyone but India. The US, China, Pakistan, they're all making inroads, while New Delhi is dealing with baseless accusations, even hostility in some quarters. Let's start with China. Their ambassador to Dhaka has been quite busy. A few days ago, he met caretaker leader Mohammad Yunus. He also invited him to visit China. Now, this is normal diplomatic protocol. Even the Indian envoy met Yunus. But the Chinese ambassador went a step ahead. First, he met the BNP leadership. The BNP is the Bangladesh Nationalist Party. It is one of the biggest parties in Bangladesh. They were the arch rivals of Sheikh Hasina. Later, the Chinese ambassador also visited the Jamaat-e-Islami office in Dhaka. And this is very significant. The Jamaat was accused of war crimes in 2010. Since then, no foreign official had visited their office. So China is the first in 14 years. The ambassador held talks with the Jamaat chief. He called them a well-organized group. Jamaat-e-Islami we used to have good relations with the Chinese Communist Party, with our embassy. But it has been affected during the last 13 years. But now we believe it's time to re-establish our close ties and restart our dialogue and cooperation. Interesting way to describe a radical Islamist group. But then again, this is China. If they can embrace the Taliban, Jamaat should not be a problem. Same with the BNP. Xi Jinping had traveled to Dhaka in 2016. Sheikh Hasina was in power back then, but Xi Jinping also met her chief rival, BNP leader Khaleda Zia. So Beijing's strategy has always been clear: keep your options open, cozy up to anyone who's in power. Which brings us to their iron brother, Pakistan. Pakistan is also courting the new powers in Dhaka. The BNP and Jamaat have old ties with Islamabad. Their new target is Mohammad Yunus. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif spoke to Yunus over the weekend. He talked about strengthening bilateral ties. Sharif also referred to the historical bond between Dhaka and Islamabad, which is frankly strange because Pakistan slaughtered Bengalis in 1971. It's not the sort of history you fondly remember in a phone call. But then again, this is the new Dhaka. We've seen Sheikh Mujibur Rahman's statues vandalized, his family home destroyed, and liberation museums targeted. So clearly, Pakistan is not taboo anymore. And this is exactly what Islamabad wanted, a reset with Dhaka. They've announced a new decision. Bangladeshis can now visit Pakistan without paying the visa fee. You would still need a visa, but you wouldn't have to pay for it. The United States is also making moves, but not overtly. Mohammad Yunus will be visiting the US this month. He is expected to address the United Nations General Assembly. A couple of things to note here. This will be Yunus's first trip abroad after taking office. Not India, not China. He is visiting the United States of America. And we get the idea behind it. The world is confused about where Bangladesh is headed. So the UNGA, the United Nations General Assembly, is a chance for Yunus to clear the air. Just one problem though. Yunus is a caretaker. His job is to oversee this tense period, to hold democratic elections. Plus, the law and order situation is not back to normal yet. So should Mohammad Yunus really be jetting off to New York? It's a question to consider. Here's another one. Where is India in all of this? Well, New Delhi is keeping an open mind. Yesterday, the Indian High Commissioner met the interim Home Minister of Bangladesh. They discussed a number of important issues like the security situation in Bangladesh, the safety of Indian nationals, and the exchange of flood warnings. And that last one, the exchange of flood warnings, is very important after the recent flood. Many Bangladeshis wrongly blamed India for causing the flood.
But beyond these exchanges, what is the status between India and Bangladesh? Well, Sheikh Hasina remains a problem. She now has 89 cases against her, most of them for murder, 89 cases. So Hasina's stay in India is a clear point of contention. The second issue is the political past. The BNP and Jamaat have historically been anti-India. On paper, they claim to have changed. Both groups have talked about strengthening ties with New Delhi. But if they come to power, who knows? It's a delicate situation for India. New Delhi has shown some flexibility recently. For example, Indian officials have held multiple rounds of talks with the Taliban. That too was considered impossible at one point. But it's happening. Same with the Maldives. Mohammad Muizzu talked about India out. He expelled Indian soldiers from the country, yet New Delhi kept engaging. It invited Muizzu for Prime Minister Modi's swearing in. So India has demonstrated diplomatic flexibility. No reason it cannot be replicated in Dhaka. Of course, the rest is up to them. India will have some red lines for the regime in Bangladesh. If they respect those red lines, ties may stabilize. If not, जी, तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि भारतीय मीडिया जो है वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहा है। यहाँ पे चाइना के एम्बेसडर ने जमात इस्लामी का ऑफिस विज़िट किया। शेख हसीना के दौर में जमात इस्लामी पे बड़े जुल्म ढाए गए, उस पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन अब इंडियन मीडिया जमात इस्लामी को एक दहशतगर्द जमात कह रहा है, जबकि जमात इस्लामी एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी है, बांग्लादेश के अंदर रजिस्टर्ड है और चाइना ने जाके उनसे मुलाकात की है, जिस वजह से भारतीय मीडिया की चीखों पुकार आप सुन रहे हैं कि किस तरह वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये एक रेडिकल ग्रुप है, दहशतगर्द ग्रुप है। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि चाइना के लिए ये कोई मसला नहीं है क्योंकि वो तालिबान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम करते हैं। तो चाइना बहुत क्लियर पॉलिसी रखता है, वो दुनिया में अमन व अमान कायम करना चाहता है और जमात इस्लामी बांग्लादेश के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट सियासी पार्टी है। इसी वजह से चाइना ने उनके साथ भी मुलाकात की और बांग्लादेश के ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने मुलाकात की। और यहाँ पे अगर बात करें शेख हसीना की, तो उन पे 89 जो है वो मर्डर्स के इल्ज़ामात हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट की तहरीक के साथ उन्होंने किया, लेकिन इसके बाद भी वो इंडिया में छुपी हुई हैं। इंडिया वालों ने उन्हें पनाह दी हुई है और इंडियन मीडिया जो है वो बांग्लादेश को लेक्चर देता है, लेकिन वो ख़ुद अपने गिरबान में नहीं झांक रहा कि उन्होंने शेख हसीना को पनाह दी हुई है जिन पे 89 मर्डर्स का पर्चा है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर फ्लड्स आए थे और बांग्लादेश के लोगों ने इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया था। भारतीय मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश का इल्ज़ाम झूठा है, लेकिन अगर देखा जाए भारत जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में फ़्लड लाने में ज़िम्मेदार होता है। जब पानी कम होता है तो भारत पानी रोक लेता है, पानी चोरी करता है पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, लेकिन जब ज़्यादा पानी आता है तो वो पानी को छोड़ देता है और इसी वजह से बांग्लादेश के अंदर फ़्लड आए। और अब बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भारत की हकीकत को जान गए हैं और इंडियन मीडिया को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही और बांग्लादेश पाकिस्तान के भी करीब आ रहा है। तो भारतीय मीडिया का यही सोचना है कि किसी तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक दूसरे से दूर किया जाए। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।